Hey guys, good evening everybody. I hope all of you are doing very well. So हम लोग अभी क्लास 9 बायोलॉजी पे जा रहे हैं. हम लोगों ने क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म कर दिया है. क्लास 9 केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए. So today I am going to start with a new chapter of class 9 बायोलॉजी. ये वाला जो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये सिर्फ आपको क्लास 9 में ही नहीं बट लेटर ऑन आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स के लिए बैठते हो उन सब में अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिस चैप्टर इज very very important. And the questions of chapter number 1 of chemistry, chapter number 2 of chemistry and chapter number 1 of physics, they have been already uploaded on the app. तो आप ऐप को डाउनलोड करो. ऐप की जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है, दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और even you can look at all these questions, practice questions on the website. Guys, this is all free for you. You don't have to pay anything to download the app. You also don't have to pay anything to see the questions. So प्रैक्टिस करो उनको क्वेश्चंस को. कोई डाउट है यू कैन चैट विद मी ऑन द ऐप और ऑन द वेबसाइट बोथ. So just go and check it out. Now, today what I'm going to do is I am going to tell you about just what all we are going to do in this. ठीक है. सो हम लोगों को देखना है कि क्लास 9 बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और उस पे भी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. राइट गाइज, सो लेट्स बिगिन. हमारा फर्स्ट चैप्टर तो बायो का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. So this is the introduction which I am doing with you कि इस chapter में what all topics we are going to do, and next class में we are going to start the chapter. There's little introduction which I am doing in this class. So first of all, this is the chapter outline. We are going to start with introduction, right? So I'm going to tell you about what all food is and what all we are going to study about food in this chapter, and how crops they are yielded, how crops are sown, what is the best soil, how can we improve the variety. So everything we are going to do in the introduction. Then in the next lecture 1.2 we are going to do improvement in crop yields. 1.3 crop variety improvement. ठीक है. सो जो भी वेराइटी हम ग्रो कर रहे हैं उसको हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, दैट ऑल वी विल डू इन 1.3. Then 1.4 we are going to do crop production management, and then 1.5 we are going to do all the manures which are generally used for better crop yields in 1.5. In 1.6 fertilizers, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं. अभी आपको पता है कि आजकल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो काफी या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो काफी कॉमन हो गई है. What is the difference between the synthetic fertilizers which we are using and the organic fertilizers which we are using, how they are going to add on to the crop yield, that all we are going to study under this. फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग. सी आई वाज टेलिंग यू दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल आप खरीदते भी हो, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खरीदने हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खरीदने हैं. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज समथिंग विच इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन. देन इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशंस कौन सी होती है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर. एंड वी विल डू क्रॉपिंग पैटर्न्स. ठीक है, कि किस तरह से हम लोग कैसे कैसे टेरेस फार्मिंग क्या है, या किस तरह से हम लोग जो पुराना जितना भी क्रॉप है उसको उसकी जगह अगर हमको कोई नया क्रॉप ग्रो करना है तो उसके लिए हम क्या क्या methods use करते हैं, that all we are going to discuss over here. Then 1.10 we are going to do crop protection management. 1.11 insect pests कौन कौन से हैं, राइट. अब फार्मिंग हो गई, हमारे पास यील्ड आ गई, तो ग्रेन्स को हम कैसे स्टोर करेंगे. एनिमल हस्बेंड्री में वी आर गोइंग टू स्टडी कि किस तरह से कैटल फार्मिंग को करा जाता है, फिश फार्मिंग को करा जाता है, या बी फार्मिंग को करा जाता है, और क्या उन सब की इंपॉर्टेंस है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. सो ओवरऑल दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग.
ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, उसमें हम कैटल फार्मिंग इज अ बिग टॉपिक, सो आई डिवाइडेड इट इनटू 3 parts. So we go to do part 1, part 2 and, oh sorry, 2 parts, part 1 and part 2. फिर उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग को भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको भी मैंने 2 में डिवाइड कर दिया है. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. देन फिश प्रोडक्शन is also a long topic, so that also I have divided it into part 1 and part 2. And beekeeping 1.17, beekeeping part 1. So in total, if we are looking at, we are having almost 18 to 20 lectures in this particular topic. ठीक है. So you be ready, we are going to start this chapter soon. उससे पहले क्वेश्चंस जो हैं केमिस्ट्री के आप प्लीज सॉल्व करो. मिड टर्म सबके आने वाले होंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करेंगे मिड टर्म्स के. सो प्लीज गो ऑन टू द ऐप, और उसमें आपके पास फ्री मटेरियल में 9th के एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस, sorry, not atomic structure, chapter 1, matter in our surroundings. Chapter 2 is matter around us, pure. All this that is there. और फिजिक्स का भी चैप्टर 1 मोशन, उसके क्वेश्चंस भी आपको फ्री है, तो आप फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशन अपनी प्रॉपर कर सकते हो. आई विल सी यू इन द क्लास soon. Till that time, study hard and take very, very good care of yourself.